सविता बहन, ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आपका। थैंक यू। मौरीन बहन भी आ गए हैं और प्यारे साथियों, आज सविता बहन ट्रांसलेशन की विशेष सेवा देंगे मधुबन से। आप आईटी डिपार्टमेंट में सेवाएं देती है और आज यहाँ विशेष ट्रांसलेशन की सेवा में उपलब्ध है सिस्टर मौरीन। सिस्टर सविता इज गोइंग टू ट्रांसलेट योर क्लास। मैं समझती थी। अच्छा, आप समझते हिंदी? ओके ओके, चलो बहुत। But I'm not fluent enough to give a class in Hindi, so but I can understand what you said. Okay. भले आप शुरू करें और आपका ट्रांसलेशन सविता बहन करेंगे। Okay. So first of all, thank you all very, very much for inviting me. And it's an honor to be speaking to my brothers and sisters in Bharat. मुझे बुलाने के लिए सबको धन्यवाद है। ये मेरा भी एक गर्व की बात है कि मैं भारत में आप सभी से बात कर रही हूँ और क्लास करा रही हूँ। I've been with Baba next month. It will be 44 years, a long time. 44 years से मैं बाबा के ज्ञान में हूँ, बहुत लंबे समय से ज्ञान में चल रही हूँ। And I came with my Yugal, David. We came together. And अपने युग के साथ ज्ञान में आए, दोनों साथ साथ ज्ञान में चले। And I think that from the very beginning, it was, I looked at the questions and I thought, what attracted us? Drishti and Brahma Bhojan. इनको क्वेश्चन पूछा, आपको ज्ञान में क्या अट्रैक्ट किया? इनको दृष्टि और ब्रह्म भोजन ने बहुत अट्रैक्ट किया बाबा के ज्ञान की तरफ। We were on holiday in Scotland and we went to the exhibition. There was no centre in Scotland at the time, but we met Sudesh Didi and her drishti really had an impact on us. ये स्कॉटलैंड यूके के पास एक छोटा सा देश है, वहां घूमने गए थे और वहां पर एक बाबा का एग्जीबिशन इन्होंने देखा और वहां पर सुदेश दीदी से ये लोग मिले जो जर्मनी में रहते हैं और सुदेश दीदी की दृष्टि ने इनको बहुत आकर्षण किया। So that time she was in UK. She'd just come to the UK just less than 2 years before. उसी समय सुदेश दीदी जस्ट 2 साल से लंदन में रहना शुरू किया था और सेवा के निमित्त स्कॉटलैंड गए हुए। Yeah. And when she met us, she didn't meet us in a normal way. Where are you from? Who are you? But she just looked at us and she said, do you want to meet God? Do you want to write a letter to God? You can, you know. So, जब ये लोग सुदेश दीदी से मिले, सुदेश दीदी ने डायरेक्टली इनको पूछा कि आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं, आप परमात्मा को लेटर लिखना चाहते हैं। ये 2 क्वेश्चन सुदेश दीदी ने इनसे पूछा, इनके और इनके युगल से। So part of my mind said, oh, this is true, this is amazing. And the other half said, is she mad or what? What is going on? तो इनका एक दिमाग ने कहने लगा शायद सही बोल रही, लेकिन दूसरे दिमाग ने कहा है क्या है, पागल है कि क्या बोल रही है। But the arrow had struck the target. लेकिन बात तो जची भी, कहाँ न कहाँ लग भी गई वो बात जो सुदेश दीदी ने सुनाया। So then we stayed for a few days to take the course. And then this was Sunday night when we first went to the exhibition. We took the course for a few days. And then Friday, she invited us for lunch for Brahma Bhojan. इन्होंने संडे के दिन, रात के दिन एग्जीबिशन को देखा था, सुदेश दीदी से मिली, फिर फ्राइडे के दिन सुदेश दीदी ने इनको सेंटर पर बुलाया और ब्रह्म भोजन खाने के लिए बुलाया। Yeah, there was no center at that time, so it was just the place where they were staying. And हाँ, वहाँ सेंटर नहीं था, ये लोग ऐसे एक जगह लेके रह रहे थे, तो इनको ब्रह्म भोजन करने के लिए उस जगह पर सुदेश दीदी ने बुलाया। And I looked at this food, very simple, dal, rice, sabzi. But I was like, I can't believe this. This is amazing. It was like,
I came in touch with Brahma Bhojan. It was like something waking up in the soul. हाँ, इन्होंने जब भोजन को देखा तो इनको बहुत वंडर लगा कि कितना सिंपल भोजन है और कुछ उनको फील हुआ कि कितना अच्छा भोजन है, तो उनको भोजन से कुछ आभास हुआ. Uh, and then we came to Baba's home in London for a week to really go into depth of Gyan. फिर ये लोग लंदन आए जहाँ पर बाबा का घर था, सेंटर था, ताकि ये अच्छे से समझ सके, ज्ञान में डीप जा सके. And then that was it. After that week, we were Paka Brahmins. बस इतना सा ही हुआ और हम पक्के ब्राह्मण बन गए. Yeah. So that was our holiday. We then went back home to the north of England, and quite soon we started service from our little flat there. ये लोग लंदन गए, ज्ञान लिया, फिर नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में जिस जगह को बिलोंग करते थे ओरिजिनली, वहां पर गए और उन्होंने वहां से सर्विस भी शुरू कर दिया, जहां पर ये लोग रहते थे छोटे से फ्लैट में. And we really felt so much help and so much power from Baba. इनको हमेशा बाबा का मदद का अनुभव होता रहा. And we every weekend we would drive to London, 4 hours drive. We'd arrive Friday evening, then we would leave again Saturday afternoon. तो ये दोनों जिस जगह पे रहते थे, एवरी वीकेंड ये लंदन जाया करते थे. 4 घंटे का ड्राइव था, वो ड्राइव करके लंदन चले जाते. And of course, Sudesh Didi, Sister Genti, and of course Daddy Janki were in London at that time. सिस्टर जयंती, सुदेश दीदी, जानकी दादी, सभी उन दिनों में लंदन में ही रहते थे. And so it was a wonderful opportunity to be close to the seniors because we were just a small group at that time. तो इनको बहुत दादी की, सीनियर्स की पालना मिली, क्योंकि छोटा सा ग्रुप था, तो ये लोग बहुत नजदीक आ गए दादी के. And every Sunday afternoon, we would enjoy Brahma Bhojan cooked by Daddy Janki. सो हर संडे के दिन दोपहर को ये लोगों को दादी जानकी जी के हाथ का ब्रह्म भोजन मिलता था. दादी खुद बनाती थी ब्रह्म भोजन. Because those days, Daddy was the cook. She used to do the cooking. उन दिनों दादी जानकी जी कुकिंग करते थे, खाना बनाने की सेवा करते थे. Because she said, okay, I don't know the language. Genti, Sister Genti, she can speak. I will give her vibrations, but I can put vibrations in the food for Baba's children. तो जयंती दीदी भाषण वगैरह करते थे, तो जानकी दादी ने कहा मैं उनको भाषण दूंगी, वाइब्रेशंस दूंगी, साथ साथ में खाना भी बनाऊंगी. But you know, the humility of the daddies, she didn't think, oh, I'm a daddy and so this isn't my work. She would never think like that. Whatever task she could do that would serve Baba's children, she would do. दादी ने कभी नहीं सोचा कि मैं कैसे खाना बनाऊंगी, मैं तो दादी हूँ. लेकिन दादी ने कहा मुझे हर प्रकार की सेवा करनी और सबकी पालना करनी, तो दादी ने खुद भोजन बनाने की सेवा दी. And I remember the first time our little group left for India, for Madhuban. Those days, because of her visa, Daddy couldn't travel to India for 4 years. But she came to the airport to see us off. पहला ग्रुप जब लंदन से मधुबन आया, जानकी दादी नहीं आ पाई क्योंकि दादी का वीजा का प्रॉब्लम था, तो दादी कई साल वहीं पर रहे और दादी एयरपोर्ट आई इन लोगों को सी ऑफ करने के लिए जो मधुबन जा रहे थे. It wasn't, I don't mean to correct, but it wasn't actually the first group. Our group was about 6, I think, but before that there had been 2 or 3 who'd gone the year before. Okay, इनका पहला ग्रुप नहीं था वैसे, उससे पहले भी ग्रुप्स आ चुके थे मधुबन में. फिर जब इनका ग्रुप गया तो दादी खुद एयरपोर्ट आई इनको सी ऑफ करने के लिए. Yeah. And Daddy would come with a big flask of chai, and she would give us all chai and nashta before we flew off.
और दादी एयरपोर्ट आती थी, चाय और नाश्ता लेकर आती थी ताकि इन लोगों को चाय और नाश्ता खिला के पिला के सी ऑफ कर सकती। तो दादी की So, पालना का एक था। so we had such a beautiful feeling of family. So it was a family feeling, इनको बहुत अनुभव होता था उनके ना दादी के साथ। Yeah. And when I came to Madhuban for the first time, we came up the mountain. Baba didn't have his own vehicles then. It was an old bus that was hired. And Daddy and Didi were waiting in the courtyard to greet us. ये जब आए मधुबन माउंट आबू में पांडव भवन में, बाबा की अपनी गाड़ी नहीं थी, जैसे तैसे वहां पर जो किराए पर गाड़ियां लेते थे उस पर वो लोग माउंट आबू पांडव भवन पहुंचे और प्रकाश मणि दादी और मनमोहिनी दीदी दोनों इन लोगों को रिसीव करने के लिए वेट कर रहे थे आंगन में, पांडव भवन के आंगन में। Pandav Bhavan, courtyard mein. And you know what really impacted me at that moment was Didi Manmohini, Didi's drishti. हाँ, इनको मनमोहिनी दीदी की भी दृष्टि ने बहुत आकर्षित किया। And I just stepped into the courtyard and she gave me drishti and she made me feel I belong to the yajna. हाँ, देन जैसे ही इन्होंने मनमोहिनी दीदी से दृष्टि लिया, इनको बहुत अच्छा लगा और दीदी ने इनको ये भावना दिलाई कि आप यज्ञ के हो। आंगन में, पांडव भवन के आंगन में दीदी ने इनको दृष्टि दी और इनको एहसास हुआ कि मैं यज्ञ को बिलोंग करती हूँ, मैं यज्ञ की हूँ। And I think, you know, from the very beginning, I always had that thought that I want to be close to the daddies, close to the yajna. तो इनको शुरू से भावना थी कि मैं यज्ञ के नजदीक रहूं और दादियों के भी नजदीक संबंध संपर्क में आऊं। And so when you have a really pure desire, your bhav is very pure, then Baba does fulfill that. या जब हमारी जो इच्छा है वो बहुत प्योर है, बाबा उस इच्छा को जरूर पूरा करता है। If there's any mixture, then Baba can't fulfill it in the same way. अगर हमारी इच्छाओं में जरा सा भी मिक्सचरिटी है, कुछ भी अगर स्वार्थ है, ऐसी कोई भावना है, बाबा उसको पूरा नहीं करता है। Yeah, that's true. Yes, it is true. And I remember when we first went in front of Baba, Baba looked at this. We first met Baba in the meditation hall, and Baba looked at us, me and David, and said, do you have any attachment? Baba was very direct. जैसे ही बाप दादा के सामने गए ये और इनके युगल डेविड, तो बाबा ने इनको डायरेक्टली पूछा, आप दोनों के बीच में कोई मोह तो नहीं है, नष्ट मोह बने हो? डायरेक्टली बाबा ने पूछा। And David said, no attachment, nothing. And I said, इनके no, go. तो इनके युगल ने पहला आंसर दिया डेविड कि नहीं बाबा, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, और इन्होंने भी सिर हिलाया, हाँ बाबा नहीं है अटैचमेंट। And I said, a little bit, Baba, a little bit. तो इन्होंने honestly जवाब दिया, हाँ बाबा थोड़ा बहुत तो है मोह करके। And then Baba said, never mind, Baba will make you both examples in front of the world. हाँ, इनको बाप दादा ने ब्लेसिंग दिया कि मैं आप दोनों को पूरे विश्व के सामने एग्जाम्पल बनाऊंगा। So there have been very sweet blessings from Baba, and the next year I came to Madhuban, I must have come early, and there was a very small group of us. We met Baba in Baba's room and we had a picnic with Baba. Oh my God! Oh, that's so nice. It was very nice. जब नेक्स्ट टाइम मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए, ये बाबा के कमरे में जो पांडव भवन में है वहां बाबा से मिले और इन्होंने अवेक बाप दादा के साथ पिकनिक भी किया। But you know that the room was half the size it is now, because you know where that little chair is and the wall, there was a wall there.
they later on made it bigger. So it was a very little room, very intimate with Baba. ये जब अवेक बाप दादा से बाबा के कमरे में मिले, वो अभी जो बाबा का कमरा है उससे आधा ही था, बहुत छोटा था और बहुत क्लोजली बाप दादा से मिले और पिकनिक पे किया. And one of the questions I was asked was, what has helped you to overcome obstacles? तो यहाँ पर आज के क्लास के लिए एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि जो भी विघ्न आते गए उस पर आपने कैसे जीत पाई. And that year, first couple of years in Gyan, there usually are some tests of attachment. या जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं, मोह को हमने कितना जीता है इसके ऊपर हमको परीक्षाएं आते हैं. And Baba looked at me, gave me a big smile, and Baba said, the one who has love can overcome all obstacles. तो बाबा ने इनको देखा और हंसे, बाबा मुस्कुराए और कहा, जिनको परमात्मा के प्रति प्यार है वो सभी विघ्नों को सहज पार कर सकते हैं. And so I really feel it has been the pull of Baba's love that's given me the courage to continue to move forward. हाँ, बाबा की जो प्यार की शक्ति है उसी ने मुझे हिम्मत दिया आगे बढ़ने. And, Baba recently in the Murli has spoken about the courage needed to follow this path. अभी रिसेंट मुरलियों में भी बाबा ने हिम्मत के बारे में कहा है, ताकि हिम्मत की शक्ति से हम कैसे आगे बढ़ सकें. And, we need courage for purity. We need courage, to change our lifestyle. We need courage to conquer attachment. And then as we go on, we need a lot of courage to conquer our ego. एक्चुअली इस ज्ञान में चलने के लिए, पवित्रता को फॉलो करने के लिए, खान पान की शुद्ध है, आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत हिम्मत की, हमारी जो ईगो होता है सूक्ष्म में, उस पर भी जीत पाने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है. And I know that I've always been very active in Baba's service. And मैं हमेशा बाबा की सेवा में मैं हमेशा एक्टिव रही. And I know Daddy Janki has really worked on me to make me more yogi. दादी जानकी ने मेरे ऊपर बहुत ही मेहनत किया है मुझे एक योगी बनाने के लिए. To have that balance of remembrance and service. हाँ, योग और सेवा दोनों का बैलेंस बनाने में मेरे ऊपर दादी ने बहुत मेहनत किया है, जानकी. And I remember asking Daddy once, well, when I serve, you see others become happy, then you become happy seeing their happiness. Is that right? जब हम किसी की सेवा करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, तो उनकी खुशी देखकर हमको भी खुशी मिलती है, ऐसा है ना? आप लोग भी ऐसे समझते हो? And Daddy said, well, it's okay, Tika, but that's earning commission. When are you going to earn your capital? You can't live off commission. हाँ, जैसे दूसरों को सेवा कर लिया, थोड़ी सी खुशी मिल गई, कमीशन मिल गई, केवल उस लेवल तक ही हमको नहीं रहना है. जैसे हमको राजा बनना, उस क्वालिटी में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है. ये दादी ने इनको अटेंशन खिंचवाया. Actually, Daddy meant like, in business, you get commission, but you have to earn the capital, the main earning. So she said, you're not doing your main earning, you're just getting commission. You see what I mean? Okay, yeah. जब हम बिजनेस करते हैं, तो हमको कमीशन भी मिलता है, जब हम थोड़ा सा इनडायरेक्टली बिजनेस करते हैं. लेकिन जब हम डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, तो डायरेक्ट हमको उसका अर्निंग मिल जाता है. तो दादी ने बोला, डायरेक्ट जो अर्निंग है उस पर अभी आपको फोकस करना है, केवल कमीशन पर नहीं. Right. And of course, that direct earning is to create and maintain an elevated stage. हाँ, वो डायरेक्ट अर्निंग माना, डायरेक्ट कमाई माना, हमारी जो श्रेष्ठ स्थिति बनती है उसके आधार पर बनती है. Because
no matter, we all face many challenges in the Brahmin family, in service, in the Lokik situation, and we need yoga power. We need the foundation of our stage to be able to overcome all of that. It's okay? Hello? Where's Savitha Bengon? Oh. Can you hear me? Oh, now we can hear you. You went on mute for a few minutes. Yeah, yes. I'm saying that we would, we face many challenges in service, in the Brahmin family, in our, Lokik situation. And so you need the foundation of yoga power to be able to move through all of that and not be put to one side. हम जब लौकिक में ज्ञान में चलते हैं, दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, तो बहुत हमको योग की शक्ति की आवश्यकता होती है ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ सके और उस बैलेंस को हम ना खोए, बैलेंस बना के रख के हम चले, उसके लिए बहुत योग की शक्ति की आवश्यकता है। But स्थिति जो है, जो मजबूत है, from this you can move ahead. हाँ, जब स्थिति हमारी मजबूत बन जाती है, हम अंदर की जो स्थिति है वो जब मजबूत बन जाती है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। And so we have to keep accumulating yoga power. तो इसीलिए योग की शक्ति को अभी हमको accumulate करना है, उसको बढ़ाना है, उसको इकट्ठा करते जाना, योग की शक्ति को। And when I asked Daddy about this once, that sometimes if you have to put yourself right because you become affected by something, it's like you're using your yoga power. And you need to keep accumulating yoga power, not spending it in putting yourself right. See what I mean? Yes, yeah. जब कोई भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है जब मुझे लगता है कि मैं राइट हूँ और उसको मुझे बताना है कि मैं राइट थी, वहां पर भी जैसे हमको अपनी योग की शक्ति को यूज करना पड़ता है। तो दादी ने कहा कि ऐसी चीजों में योग की शक्ति जो आपने एक्यूमुलेट किया है वो यूज नहीं करना है, आपको अपनी योग की जो शक्ति है उसको बढ़ाते जाना है, उसको कम नहीं करना है। So it's like so she said, no matter what comes in front of you, nothing should interfere with the accumulation of yoga power. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके सामने क्या भी आ रहा है, योग की शक्ति को जो जमा करना है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। Yeah, nothing should come in between, right? हाँ, हमारे और योग की शक्ति के बीच में कोई भी बीच में चीज ना आए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी है, यानी कुछ भी है वो चीज। Yeah. I watched, Daddy would never ask us to do anything that she herself wouldn't do. जो भी दादी खुद नहीं करती थी, दादी वो काम करने के लिए हमको नहीं कहती थी। दादी ने प्रैक्टिकली जो किया वही हमको कहती थी, आप भी करो। And so you always felt that whatever words she said, they had a lot of power. हाँ, दादी ने एक शब्द भी कुछ भी कहा हो उसमें बहुत शक्ति है, शक्ति था, ये हमने अनुभव किया। And it wasn't just to make you feel good, but it was to inspire you to see what is the next thing I need to do in my effort. जिन्हें थोड़ा सा उमंग उत्साह दिलाने के लिए दादी वो बात कहती थी, प्रैक्टिकली मुझे अभी आगे क्या करना है, उस पर दादी फोकस करके कोई भी बात हमको बोलती थी। And Daddy didn't praise me very much, but she used to put her finger out quite a bit. दादी ने मेरी बहुत महिमा तो नहीं की, हमेशा ऐसे हाथ दिखाती थी, like this। तो दादी ने बहुत महिमा मेरी कभी नहीं किया सामने से, लेकिन हाथ दिखाती थी, अंगुली दिखाती थी ऐसे। Anguli, yeah. And when we had Global Cooperation House, and we worked very closely with Daddy and would ask her
lots of things, every little thing really, we would ask her. जो लंदन का सेंटर है मेन वाला ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, ग्लोबल हाउस के नाम से हम उसको जानते हैं, तो जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, वो बना, तो इनको बहुत मौका मिला दादी के साथ काम करने का। कैसे दादी छोटी छोटी बात तो हमको सबसे पूछ के करती है, ये अनुभव इनको हुआ। And one day I went to her to ask something and she started correcting me on something. तो मैं एक बार दादी से कुछ पूछने के लिए गई, तो दादी ने मुझे ऐसे अंगुली दिखाकर मुझे करेक्शन करने लगी। And then she stopped herself and she said, "You always come to me with so much love and I give you corrections. I promise I won't do that anymore." तो जब वे कुछ बात लेकर दादी के पास गए, तो दादी ने कहा, आप हमेशा मेरे पास इतना प्यार से आती हो कोई भी बात लेकर के, और मैं हमेशा अंगुली दिखा के करेक्शंस ही करती रहती हूँ, ये मैं अभी आगे से नहीं करूंगी, ऐसे दादी ने बताया। I said, okay, Daddy, fine. Then इन्होंने कहा, ठीक है दादी, ओके। And then, anyway, an hour later or something, I went to her again, and again she took out her finger. फिर इनको दादी के पास कोई भी बात लेकर जाना पड़ा, फिर दादी ने ऐसे ऐसे अंगुली दिखाया। And then I said to Daddy, "Daddy, remember your promise?" तो इन्होंने फिर दादी को कहा, दादी आपको अपना प्रॉमिस याद है, आपने बोला था मैं ऐसे ऐसे फिर नहीं करूंगी। Oh, she started laughing. We both started laughing and laughing and laughing. तो फिर इन दोनों को हंसी आई और दोनों बहुत लंबे टाइम तक हंसते रहे, हंसते रहे, हंसते रहे। In this way, you know, Daddy was Daddy, but also our friend. दादी दादी भी थी और ऐसे बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, दोस्त भी थी। And Daddy would always push us close to the other daddies when we were in Madhuban. हाँ, इनको ये भी भाग्य मिलता था, दादी जान के हमेशा इनको दूसरी जो भी दादियां थी उनके भी नजदीक जाने के लिए इंस्पायर लाइक प्रोत्साहन देती थी कि दूसरे दादी उनसे भी पालना लो। And all the daddies have different personalities, as you know. आप भी जानते हैं, हर एक दादी का अपना पर्सनालिटी है। And I remember we were in Daddy G's meeting room, and there was Daddy G and there was Daddy G, Daddy Gulzar in the middle, and then Daddy Janki sitting there. So दादी जी मीटिंग हॉल में ये लोग दादी से मिल रहे थे, बड़ी दादी बैठी थी, उनके बाजू में गुलजार दादी और उनके बाजू में जानकी दादी बैठी। And Daddy G was, you know, how she would tell you about the household and what's happening in Madhuban and everything. And Daddy Janki kept wanting to interrupt her and say something. तो इतना नेचुरल वो कॉन्वर्सेशन था, बड़ी दादी जो है मधुबन में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, उसके बारे में सुना रही थी, और जानकी दादी बीच में कुछ सुनाना चाहती थी। दादी को बहुत था कि मैं बीच में कुछ सुनाऊं। Yeah. So the two of them were having this little, you know, not argument, you know, exchange. And वो बहुत प्यारी सी एक सीन थी जहां पर बड़ी दादी भी कुछ बोलना चाहती थी, उसके बीच में जानकी दादी भी अपना कुछ कहना चाहती थी, तो बहुत मजेदार सीन था। And then suddenly they stopped and they turned to Daddy Gulzar in the middle and they said, "Gulzar, what do you think?" ऐसे Oh, you went on mute. Okay. What happened? You went on mute. Hello, yeah. Can you hear me? Yeah, now I can hear you. तो ऐसे जब हो रहा था, तो इन्होंने फिर गुलजार दादी को पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। And she said, "Oh, I wasn't thinking anything. I was just listening." तो गुलजार दादी ने कहा कि मैं कुछ सोच नहीं रही थी इन सब चीजों के बारे में, मैं तो केवल आप दोनों की बातें सुन रही थी। You know, they would call Daddy Gulzar Nir Sankalp Devta, right? निर्संकल्प। सो दादी गुलजार के लिए कहा जाता है वो निर्संकल्प देवता है।
But you saw the personalities of the daddies. Daddy Kumarka, Daddy Gulzar, Daddy Janki, so different. हमने तीनों की पर्सनालिटी को देखा, दादी कुमार, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, सबकी पर्सनालिटी अपनी अपनी थी, विशेष थी, अलग थी. And yet they had total unity. हाँ, अलग अलग होते भी एकता थी उन तीनों के बीच में, एक थे. Oh, no, don't worry. I was just saying that once when Daddy Gulzar was in London, and a few of us went to see her off at the airport. हाँ, ये जब दादी गुलजार एक बार लंदन गए थे तो ये कुछ लोग दादी से मिलने एयरपोर्ट गए, दादी को रिसीव करने. Yeah. And she said to us, she said, when Baba left the body, all the main daddies came together and they pledged absolute unity to one another. या तो गुलजार दादी ने कहा कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सभी दादियों ने मिलकर जैसे बाबा के सामने वायदा किया कि हम एक होकर रहेंगे, एकता को बना के रखेंगे. Because they knew that if they didn't have that unity, the yajna couldn't continue. हाँ, उनको मालूम था कि अगर उनमें वो एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो यज्ञ को नहीं आगे ले जा सकते हैं. And you think how much Baba emphasizes unity. हाँ, हम भी जानते हैं कि बाबा कितना एकता के ऊपर हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम सबको भी एक होकर रहना है. And this is something we saw in Daddy. She made sure that everybody moved together. Daddy Janki. हाँ, दादी जानकी ने भी यही प्रिंसिपल जैसे अप्लाई किया कि सबको एक होकर के चलना है और सबको एक साथ ही लेकर आगे जाना है. And along with that, she paid a lot of attention to the atmosphere. हाँ, दादी ने उसके साथ साथ अच्छे वातावरण बनाने में भी बहुत ध्यान दिया. And as I've gone on in service, I've understood that the most important service is to create a powerful atmosphere. हाँ, जैसे जैसे हम सर्विस करते गए मुझे भी ये अनुभव हुआ कि एकता को बना के रखना बहुत जरूरी है सर्विस की सफलता के लिए. Or the main thing, to create a powerful atmosphere wherever you are. तो कहाँ पर भी आप है, शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का आधार है एकता. Because with that, everybody else is uplifted. एकता की शक्ति से सबको हम ऊपर उठा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं. Definitely ekta ki shakti se, but also powerful vatavaran se. हाँ, विद पावरफुल वातावरण से और एकता की शक्ति दोनों से हम सबको आगे बढ़ा सकते हैं. Yeah. And of course, this is possible when, yesterday in the Murli, Baba talked about the third eye, right? कल की मुरली में बाबा ने तीसरे नेत्र के बारे में कहा है. And we usually have a churning after the Murli. And usually हम मुरली क्लास के बाद जो भी बाबा ने कहा है उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं. And one sister said, we asked the question, what does it really mean practically to live with your third eye open? एक सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा कि तीसरा आंख को खोलकर रहना, इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, इसका मतलब क्या है. And so there were various answers, but one sister said it means to be yourself and to allow everybody else to be themselves. तो किसी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, तीसरा नेत्र को खोल के रहना माना खुद अपने आप में रहना और दूसरों को भी वो जो है जैसे हैं वैसे ही रहने देना, वैसे ही चलने देना. So that means no criticism, no, you don't try to control anybody, but you maintain a powerful
atmosphere, good feelings and good thoughts. हाँ, इसका मतलब है कि दूसरों को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनको कुछ बोलेंगे नहीं और अच्छी भावनाओं के साथ सबके लिए गुड विशेस रखते हुए पावरफुल वातावरण को भी हम बनाएंगे। वो होता है तीसरे नेत्र को खोल के रखने का मतलब। And that touched me very much. It's so important not to try to force anybody to change. हाँ वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी को हम परिवर्तन होने के लिए फोर्स नहीं हमको करना है। Because if you try to force somebody to change, they will then do more of the behavior you want to change. They will be more strong in their and stubborn in their negative behavior, right? राइट। अगर हम किसी को बहुत जबरदस्ती चेंज करने के लिए हम कोशिश करते हैं तो वो जो जिस संस्कार को हमको चेंज करना है वो चेंज नहीं होगा और ही फोर्सफुली वो संस्कार बाहर आएगा। But if you give somebody respect and good wishes, there's definitely a chance they will change. अगर हम दूसरों को सम्मान देते हैं और रेस्पेक्ट and good wishes, शुभ भावनाएं देते हैं तो सच में वो आत्मा बदल सकती है। So these are all the things we saw in the daddies about how they interacted with us. So ये सब बातें हमने दादियों में देखा, जब भी दादियों ने हम सबके साथ मिले, हम सबके साथ ज्ञान शेयर किया, तो सारी बातों को हमने दादियों में देखा है। Do you want to stop for any questions or anything? कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, बीच में रुकना है, प्लीज बताइए। I think Minish by saying something, but we can't hear, no? Is the microphone plugged in or? Okay, now. Yes. Okay. So, sister, please continue about your UK services and something else. Okay. Because we have good enough time. But in between, I'm asking you one question. Now, Dadi Janki is in subtle form, not in available in physical form right now. So, what kind of feeling you have in your mind right now? You know, when Daddy left the body, we had just started the lockdown, you know, because of the coronavirus. जैसे ही दादी ने शरीर छोड़ा, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन भी शुरू हो गया। And I feel like I've not had time to really understand that Daddy has gone. हाँ, मैं विश्वास ही नहीं कर पाई कि हाँ दादी ने सचमुच शरीर छोड़ा है। मैं उसको मैं समझ नहीं पाई कि कितना जल्दी दादी चली गई। Yeah. And I feel her presence. I definitely feel her presence. जरूर मुझे उनकी जो प्रेजेंस है वो मेरे साथ है, अनुभव जरूर होता है। And I feel that she is still guiding us from the subtle regions. She's in a new body now, but the subtle form is working. That's for sure. दादी का जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म वतन से हो या कहीं पर भी उन्होंने जन्म लिया है, बट उनका जो सूक्ष्म रूप है वो हमको हमेशा गाइड करता है, हमारे साथ वो हमेशा है। But I don't think my mind fully accepts that she's not here, if I'm honest. मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि दादी मेरे साथ नहीं करते। But I know when I go to Madhuban, we don't know when we can go, maybe next year, then I will really understand that she's not here anymore. Actually, जब मैं नेक्स्ट टाइम मधुबन जाऊंगी, पता नहीं कब जा पाएंगे, शायद नेक्स्ट ईयर, तब मुझे शायद थोड़ा सा ये आभास होगा कि दादी नहीं है, लेकिन अभी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दादी नहीं। Vishwas, or you know, not Vishwas, well I know, but accepting, you know. मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, स्वीकार नहीं कर। That's it, yeah. So yes, and Sister Genti came back 2 days ago from Madhuban, exactly. And she was away for 5.5 months. जयंती दीदी 5.5 मास से लंदन से आकर के मधुबन में रहे और 2 दिन पहले लंदन वापस पहुंच गए हैं।
And of course, when she arrived, she went to Baba's room and then to Daddy's room. तो जैसे दीदी या जैसे जयंती दीदी पहुंचे लंदन, वहां पर बाबा के कमरे में गए और दादी के रूम में भी गए. And of course, when she went into Daddy's room, she had a few tears. She had? Few tears. Oh my God. Okay. Of course. So when Jayanti Didi went to Dadi's room, Jayanti Didi के आंखों में पानी था. दादी को उन्होंने मिस किया. Yeah. We understand. And then the rest of us felt the same. और हम सभी भी थोड़ा बहुत like emotional हो गए और रोने लगे दादी को याद. So there are those moments तो when you realize. Yeah, तो जब लगता है कि दादी नहीं है तो फिर थोड़ा ऐसे फील हमको भी होता है. उन क्षणों में हम दादी को मिस कर रहे हैं. Yes, we can understand. So, sister, Dadi was bouquet of all the virtues, but which virtue you like most? In Daddy? Yeah, in Dadi. She told me, she told me, I will never give up on you. Okay. And so her ability to believe in you and believe in you completely. Okay. And then this, we say the sky's the limit. Anything is possible for you. Sorry, I could not hear that part. Can you repeat again? Daddy said, I will never give up on you. Never give up. I have to say that. Yeah, okay, yeah. एक्चुअली दादियों में तो बहुत क्वालिटीज है ही, राम की दादी में खास करके, लेकिन दादी ने कभी हम पर छोड़ा नहीं विश्वास. लाइक दादी ने कभी विश्वास नहीं छोड़ा कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे. दादी हम पर मेहनत करना कभी छोड़ा नहीं. And so sister, it shows the Dadi had great love for you and with you. Okay. And for many, not only me, of course, but my experience, yes. Yes. But just a little bit more about London, because, Daddy came to London. It was a little house, just 2 rooms, damp place. By the time I came, there was the house next door as well. Things... Okay. Savitha, join now. जब दादी लंदन, okay, I speak little in Hindi. Maybe I can manage. जब दादी लंदन में आए, तो बहुत simple रहा. Just like 2 कमरे, बहुत simple, अच्छी नहीं है, जैसे damp है. और दादी इस conditions में रहती थी. और जब मैं आई 2 साल, दादी 1974 लंदन में आई. मैं ज्ञान मिला है 1976. So उस समय बाजू में पूरा house मिला है. So we had the 2, the flat and then the house next door. Okay? All right. Yeah, I'm here. All right, okay. Okay. You said that part in Hindi. It was quite good. I'll go back to English then. And of course, Daddy always, there was always expansion. So sorry, Sister Genti's calling me. Hold on. Hello. I'm on a class to. Janti दीदी ने इनको अभी फोन किया. Janti दीदी को जवाब दे रहे हैं. I'll call you in a few minutes. In 10 minutes. In 10 minutes. Janti दीदी का इनके पास फोन आया अभी. क्लास इस ग्रुप में. सिस्टर मॉरिन, जयंती बहन ने भी इस ग्रुप के साथ अपना अनुभव शेयर किया है. बहुत अच्छा. Very good. Thank you. Please continue. I will remind her. So then within a couple of years, we had a bigger house, which could hold, I think, 80 or so in the classroom. Okay. बस 1-2 साल के बाद ही इनको थोड़ा सा बड़ा घर मिला जहाँ पर 80 लोग बैठ सकते थे. इतना बड़ा क्लास हॉल भी मिला. And then the class grew very big, and so we were looking for a big center. So for 9 years, we used to have our classes in a community center.
हाँ, तो बाहर के जो कम्युनिटी सेंटर होते हैं वहां पर बाड़ा दे करके ये लोग फिर बाहर क्लासेस कराने लगे क्योंकि स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो बढ़ने ही लगी. Mm. And and then it was in 1991 that we were able to build Global Cooperation House. हाँ, फिर 1991 में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस का कंस्ट्रक्शन हुआ और कंप्लीट हुआ. And Daddy शुरू was so proud of this house. जानकी दादी को ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस के प्रति बहुत 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 ही प्राउड था. दादी को बहुत खुशी हुई कि ये भवन बना. And of course, when we got the land, there was an old building on it. And to make just one-story building, a big hall, was going to cost £1 million. ओके, तो वहां पर जहां पर इनको जगह मिली वहां ऑलरेडी एक छोटा सा घर था. उसको हटा के इनको एक फ्लोर का भी बनाए ताकि हॉल बन जाए. उसके लिए भी जैसे बहुत पैसे खर्च होने वाले थे. 1 मिलियन पाउंड मतलब 8 करोड़ इन इंडियन, 8 करोड़ जितने पैसे लगने वाले थे उन दिनों में. And Daddy said, "This is too much. Where will we get £1 million?" दादी ने कहा ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे. Then within a few days, Daddy Shiel came to London. फिर कुछ ही दिनों बाद ये बात चली और कुछ ही दिनों बाद दादी उड़ करके लंदन पहुंच गई. Daddy Shiel, yeah? सॉरी, दादी? Daddy Shiel, Shiel Daddy, Didi's sister. शील दादी लंदन पहुंची. And of course, she was an official trans messenger of the Yagya. ओके, और शील दादी जी जो थे वो यज्ञ के ऑफिशियल ट्रांस मैसेंजर थी जो बाबा का संदेश लेकर आती थी. And so Daddy sent her with lots of questions to Baba. तो जानकी दादी ने शील दादी को बहुत क्वेश्चंस दिए और बोला कि ये सारे क्वेश्चंस का जवाब बाबा से लेकर आओ. And I was there when she came back from trance, and she had all these points in Sindhi she had written. And तो जब शील दादी गए वतन में बाबा से संदेश लेकर के वापस आई और कुछ पॉइंट्स उन्होंने नोट किया जो सिंधी भाषा में थी. उस मोमेंट में मैं भी वहां पर थी. And she told Daddy, Baba says, don't just build a 1-story building, build a 3 to 4-story building, and don't worry, all the resources will come. Oh my God. तो बाबा ने शील दादी के द्वारा संदेश भेजा था कि केवल 1 फ्लोर का आपको घर नहीं बनाना है, 2, 3, 4 फ्लोर का भी भले बनाओ, समय पर पैसा आ जाएगा. And of course, Daddy immediately shifted, total faith, and we started the plans. दादी को पूरा विश्वास हो गया और पूरा प्लान के साथ इन्होंने भवन का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया. Instant change, instantly she accepted. Instantly, जैसे शील दादी ने मैसेज लेकर आई, तुरंत दादी ने डिसीजन लिया और काम भी शुरू हो गया. And then we built this house, and then 2 years later we got the Global Retreat Center. Okay. तो ये ग्लोबल हाउस बना. उसके बाद फिर 2 साल के बाद ग्लोबल रिट्रीट सेंटर जो ऑक्सफोर्ड में है वो बना. So yes, Baba has done many miracles here through Daddy. बाबा दादी के द्वारा बहुत बहुत सारे मिरेकल्स किया है लंदन में, हमने देखा है practically. Yeah, and now through the 80s and the 90s, service spread. Now it's 120 countries, and Daddy visited nearly all those countries. Yeah, so 80 के दिनों में फिर 90 के दिनों में बहुत सेवा की वृद्धि हुई. 120 देशों में सेवा हुई और दादी ने मोस्टली सभी देशों का चक्कर लगाया है. And Daddy would give so much personal support to all the instruments. जो भी जहाँ पर भी जिस भी देश में निमित्त है उनको दादी पर्सनली व्यक्तिगत रूप में बहुत सारा पालना दिया है, सपोर्ट दिया है, हिम्मत दिया है ताकि सेवा आगे बढ़ सके. That's right, because she knew that those instruments will serve so many others. क्योंकि वो जो निमित्त थे देश के, दादी को मालूम था इनको पालना देने से फिर इनके द्वारा कई आत्माओं की सेवा होगी.
And of course, we've done service in so many. We have about 50 centres in the UK. बहुत सेवा हुई, लगभग 50 सेंटर्स है यूनाइटेड किंगडम देश में, यूके में. Of course, compared to India, it's little. इंडिया के भारत के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन फिर भी काफी सेवा हुई है. And yes, we've served in all sectors of society, religious leaders, political leaders, in prisons, social workers. I mean, lots of areas, many, many areas. हमने सभी वर्गों की सेवा किया है, चाहे धार्मिक लोग हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, भले जेल में रहने वाले, माना सभी सोसाइटी के जितने भी वर्ग है, सभी लोगों की सेवा हमने यहाँ किया है. Because spirituality is for everyone. हाँ, क्योंकि आध्यात्मिकता मानव सबके लिए है, सभी वर्गों के लिए है. And Daddy always had a big, big heart. दादी का हमेशा बहुत ही बड़ा दिल रहता था सेवाओं के लिए, तो हम सेवाएं करते गए. Always giving, whether she's giving you gifts, whether she's giving you gyan, whether she's giving you the power of yoga, always, always, not even a minute when she's not giving. या हर मोमेंट, हर क्षण दादी कुछ ना कुछ देती थी, चाहे ज्ञान देती थी, चाहे सौगात देती थी, चाहे योग की शक्ति देती थी, लेकिन दादी कुछ ना कुछ हमेशा हर घड़ी देती रही. And I remember once going with Daddy to a prison, and there was a prisoner there who'd done a very bad crime. Okay. But he was an expert in carpentry. Okay. या ये लोग एक बार जेल में गए, वहां पर एक कैदी से मिले, बहुत ही खतरनाक कैदी था और बहुत ही गलत काम उसने किया, तो वो एक कारपेंटर भी था, तो दादी और ये सिस्टर उनसे मिलने जेल गए. And he had carved a beautiful chair and desk for Daddy, specially as a gift. Okay. उसने खास एक चेयर और डेस्क अच्छे से डिजाइन करके दिया, क्योंकि वो कारपेंटर था, ताकि दादी उसको यूज कर सके. So he wanted to present that to Daddy. वो दादी को गिफ्ट में देना चाहता था. And on the journey, I asked Daddy, I said, Daddy, there are so many good people in the world, but Baba's sending you to someone who's done such a bad crime. तो अब जब वापस आ रहे थे जेल से, तो No, इन्होंने on the way there, on the way to the jail. On the way to the jail. Okay, जब जा रहे थे जेल सेवा के लिए, तो इन्होंने दादी को पूछा, दादी बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस संसार में, लेकिन बाबा आपको उनकी सेवा करने के लिए जेल में क्यों भेज रहा है? And Daddy said, yes, there are many good people, but they have arrogance of their goodness. दादी ने कहा बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको उनकी अच्छाई का अहंकार भी है. And here's a soul who has reached the very bottom and is crying out to God. So Baba sends me to him. ये जो आत्मा है जिसने बहुत गलत काम किए हैं, वो अंदर से बहुत रो रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है, याद कर रहा है, इसलिए उसकी सेवा करना जरूरी है. So this was Daddy's benevolent attitude. हाँ, ये दादी की जो महानता थी, श्रेष्ठता थी, यही है जो हमको देखने को मिली. Okay. Om Shanti. Thank you so much. Okay, Om Shanti. Thank you so much. It was wonderful. It was very nice to meet you. तो सिस्टर मॉरीन, बाबा कहते हैं कि संग का रंग लगता है, तो क्योंकि दादी के संग आप रहे, तो दादी के संग का रंग आपको भी लगा हुआ है. तो दादी जिस तरह से पारस थी, वो फीलिंग आपसे भी, आपके अनुभवों को सुनते हुए, आपको देखते हुए भी वो अनुभूति हो रही है. तो आपने बहुत दिल से, बहुत खुशी से आपके अनुभव सुनाए, दादी की छोटी छोटी बातें भी आपने सुनाई. इसके लिए हम सब बड़ौदा फैमिली आपके बहुत बहुत आभारी है. वी थैंक यू. एंड खास करके एक खुशी की बात सिस्टर मॉरीन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, एंड दैट इज while translating your experience, Savitha Ben enjoyed the most, continues laughing, continues Exactly. though her mobile disturbed her many times, but she maintained her happiness.
So ये Because I stay, मैं मोरिन बहन के साथ 3 मास लंदन में रही हूँ. अच्छा, तो एक खुशी का कारण ये भी है, आज अब समझ में आया, बहुत अच्छी बात है ये तो बहुत मुबारक है मौरीन बहन आपको भी, और सविता बहन शायद फिर मोबाइल ने कुछ धोखा दिया है। सो हाँ सविता बहन आप हमें सुन रहे हैं? हाँ, तो सविता बहन आपको भी बहुत मुबारक, आपने बहुत अच्छे से आपकी सेवा प्रदान की। तो मैं साथ साथ प्रवीणा बहन का भी धन्यवाद अदा जरूर करना Yes, प्रवीणा बहन ने प्रबंध किया, that's right. हाँ, क्योंकि मौरीन बहन से मिलाने का प्रबंध भी प्रवीणा बहन का रहा, और सविता बहन से मिलाने का भी प्रबंध प्रवीणा बहन नहीं किया, तो प्रवीणा बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब और चंपा बहन है, तो चंपा बहन आप दोनों भी अपने मन की बात रखे मौरीन बहन के सामने। हाँ, मैं देखती हमारे प्यारे डेविड भाई कहाँ है अभी? कहाँ है? नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में है, वहाँ सारी सेंटर्स है, तो डेविड संभाल रहे हैं वो अच्छा, सेंटर्स। हाँ, और आप? मैं लंदन में हूँ, मैं लंदन में रहती हूँ लंदन बहुत में? साल से, अभी 35 years। हाँ, ग्लोबल हाउस में ही रहते हैं, मतलब वहाँ ही कनेक्शन में है आप? नहीं, ग्लोबल हाउस में। अच्छा, मैंने ग्लोबल हाउस, मैंने मुख्य भवन बाजू में है, तो सारी बहन भवन में रहती है। अच्छा, बट आजकल ग्लोबल हाउस में हूँ क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है। अच्छा। हम सुखधाम में इनके साथ 3 मास रहे. Yes, that's right, absolutely, yes. मोरिन बहन अच्छा Okay, हिंदी जानते हैं? हाँ, हिंदी? okay, हाँ, हम साथ में जी सेवा की हुई है। दिल्ली में जब कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर्स के लिए, हाँ, मेला था, तब आप आए थे उधर, याद है आपको? आप थे दिल्ली में? याद नहीं, परंतु याद नहीं है, बहुत साल हो गया। और डेविड भाई जो है, डेविड ब्रदर डेविड, वो हमारे साथ सारी रैली थी, डॉक्टर्स रैली थी। हाँ, रैली पर गए, आई रिमेम्बर दैट, यस। हाँ, वो तब मेरे साथ ही थे, तो हमारा मेडिकल का ग्रुप साथ में था, तब वो भी साथ में थे। बहुत अच्छी सेवा उन्होंने की थी। मैं आपका याद प्यार देंगे और दिलाएंगे। जरूर। हाँ, बहुत साल हो गया, अभी याद है कि नहीं, लेकिन he would remember that, the tour he would remember. Okay, अभी I will have to go now. Sorry, but I have another को जाना है अभी, तो हाँ, इसलिए ओम शांति कर रहे हैं. Okay, lovely to meet you. Om Shanti. शांति। Om Shanti.